Good morning, everyone. Now, today's lecture we are going to discuss about some concept in depth in Java. So, this is Rahul Kumar Dikshit, and my channel is @code with Rahul. Please like, do subscribe my channel to get into this dive into the Java. तो अभी तक हम लोगों ने काफी थ्योरेटिकल बातें कर ली. अब हम जावा के कंस्ट्रक्ट्स पर आते हैं. देखिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए if you want to learn any kind of language, whether it is a मतलब इंग्लिश और हिंदी, तो उसमें भी आपको उसको सीखने से पहले उसके अल्फाबेट्स को सीखना पड़ता है. Let's say in English you have to learn first of all A, B, C, D, and then blah 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 and then if you want to learn Hindi, then छोटा बड़ा छोटी बड़ी and let's say you have to learn about the alphabets. So in the same manner, if you want to learn any programming language, you have to learn about the keywords. So today we are going to learn about the keywords. इफ यू आर गोइंग अगर जो आपको इन सारे कीवर्ड्स के बारे में पता चल गया आपको जवाब है. तो जावा कीवर्ड्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट्स. सो व्हाट इज दीज आर द कंस्ट्रक्ट्स ऑफ Java. The keywords are having a predefined meaning. What is the keywords? So what is the definition for the keywords? Keywords is a words defined in Java which has some predefined meanings. तो दैट प्री डिफाइन करते जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाने के लिए जा रहे हैं या कुछ भी बनाने जा रहे हैं तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले से ही कुछ चीजें हमारे पास होती हैं जिनकी मदद से हम उस बिल्डिंग को बनाते हैं. Let's say crane is there. You go to the builder site. वहां पर आपको क्या मिलेगा? सरिया इज ऑल्सो देयर, सीमेंट इज देयर. तो कुछ प्री डिफाइंड कंस्ट्रक्ट्स हैं जिनकी मदद से हम पूरी बिल्डिंग को बनाते हैं. So that is the ingredients by which we can make our food. By use of which we can make our food. So that is nothing but a Java keyword. It has every keyword has its some meaning over there. The programming. So how many keywords are there depicted here? What is that? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 1, 2, 3, 4, 5. 49 keywords are here, in which there are two keywords, cons and go to, is reserved for future purpose. Cons and go to keywords are reserved for the future purpose. They are keyword, but they are not still in use. Rest all keywords are in use. So you have to by heart these all the keywords if you want to learn Java. And we are going to discuss bit by bit, and we are rounding these. This is discussed, this is discussed, this is discussed one by one. और आप भी इसको अपने नोटबुक पर लिख ले और जो भी कीवर्ड हम पढ़ते जा रहे हैं उसको आप लिखते चले जाइए. और आप लोग इसके बारे में जरूर पहले जावा सीखने से पहले इन कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे. So starting with the beginning, after getting this, let's say there is a int type is there, long is there, name is there. कुछ keywords आपको पहले से पता है जिन लोगों ने C या C++ कोई भी लैंग्वेज देखी है. तो void is there, while is there, throw is there, this is there, huh? if is there. ये कुछ कॉमन कीवर्ड्स हैं जो C++ में भी थे.
So these are the Java keywords. You have to write down one line for each in your notebook if you want to by heart these things. Now, the very first topic after the keyword we are going to discuss it on. That is nothing but an identifier. What is that? An identifier. So what is the identifier? So an identifier, it is used. What is identifier? Identifying something is an identifier. In layman language, हम लोगों के नाम आइडेंटिफायर, किसी भी आइटम का नाम आइडेंटिफायर। तो हम किसी हर एक चीज को हम लोगों ने कुछ ना कुछ एक नाम दिया हुआ है। लैपटॉप, कंप्यूटर, नोटबुक, बॉटल, पैड is an identifier. The name of anything is an identifier. So, in Java language, what we are discussing here, we are discussing here identifier. So, what is identifier? Name of anything is an identifier. Name of anything is an identifier. What that means is any variable name is identifier. Class name is identifier. Method name is identifier. So anything which is identifying something is called identity. But ऐसे ही किसी का नाम नहीं रख दिया जाता है. There are some basic rules to give an identifier to somebody. So basically, there is a rule for giving a name. So there are some naming convention to give an identifier. So that is nothing but a naming convention, or you can say that rule to give identifier name. What that rule are? Number one, name must not be a keyword. The very first definition, इसीलिए मैंने आपको keywords पहले बताया. किसी भी चीज को यदि आप नए किसी भी नए आदमी को यदि आप कोई नाम दे रहे हैं तो ये जरूर ध्यान रखना है कि वो पहले से कीवर्ड ना हो. किसी को हम इंट नाम नहीं दे सकते. वी आर नॉट गिविंग इंट एज ए नेम एज एन आइडेंटिफायर टू एनीबॉडी. So those 49 keywords never be an identifier. Point number two, name does not start with literals. Name does not start with literals. क्या लिटरल क्या होता है अभी हम डिस्कस करें. नंबर थर्ड, name may start with letter or underscore. किसी भी वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर और उसके लेटर से स्टार्ट हो सकता है. एग्जाम्पल में भी आप लोग देख सकते हैं. अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ पहले. नेम डज नॉट contain special symbols except
underscore. What that mean is, so let's discuss. So first of all, we are going to discuss what is literal first. So what is literal? Literal is a constant value in any program. That is what? Let's say 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is integer literal. Every literal has some value actually. And the type of these literals are integers. That's why we can say that this is an integer literal. What is float literal? Let's say 4.4, 1.1, 2.4. So what kind of literal is this? This is a float literal, which also have some special value. The third kind of literal is character literal. A character literal is nothing but enclosed within a single code. Only one character enclosed within a single code is called character literal. 7 is also a character literal because it is enclosed the single quote. So anything, any letter which is enclosed with single quote is called character literal. And the last one is string literal. Any sentence, any word which is enclosed with double code. Let's say my name is Rahul. So that is called string literal because it is enclosed with double quote Rahul. So this is string literal, this is character literal, this is float literal, and this is integer literal. So what is the literal? Literal is a constant value. Somebody is asking you in the interview, what is literal? Literal is a constant value. There are four kinds of literals in this language: integer literal, float literal, character literal, and string literal. So now moving ahead, our next ruling. So what is the naming convention? The first thing is name must not be same as what? Keyword. So I'm not making name as like this. Int. Int is not a name. It's not eligible for the name because int is a predefined data type. Predefined keyword. Int is a predefined keyword. It not be eligible for the identity. Next thing. A name does not start with literals. What are the literals? अभी हमने discuss किया integer literal, float literal. So name could not be like this. 4.4 Rahul because it starts with literals. No? To count is not eligible for this, but it starts with literals like this. To count is not eligible. Next, name may start with underscore. This is the valid underscore Rahul is valid identifier. Underscore is also a valid two underscore. So name may start with literal and sorry may start with underscore. Name may contain underscore. Name must not contain a special symbol. What is that? मैं ऐसा नहीं लिख सकता Rahul @Rahul. It is not a valid identifier because it contains @. An identifier may contain only underscore as a special symbol. It does not contain literals. Sorry, special symbols. Is it clear to all of you?
And one thing more, only integer literal can be a part can contain by the variable. Like this, let's say x1, it is a valid identifier, but x 4.4 is not a valid identifier. Not valid. Because of not, this is a literal, because of this is containing a dot operator here. इंटीजर को छोड़कर बाकी सारे लिटरल में कोई ना कोई स्पेशल सिंबल्स आ रहा है, जैसे 4.4 dot operator is there, character double single quote is there, Rahul double quote is there. So only integer literal can be a part of identifier, but लिटरल हम लिटरल से स्टार्ट नहीं कर सकते, उस लिटरल से स्टार्ट नहीं कर सकते. हम ऐसा लिख सकते हैं, टू काउंट नहीं लिख सकते, बट काउंट टू लिख सकते हैं. तो इफ एनी, हम किसी को भी नाम देने जा रहे हैं, अगर जो वो चारों रूल्स को फॉलो कर रहा है, देन वी कैन से दैट इट इज अ वैलिड आइडेंटिफायर. जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे, हम इसके बारे में और भी सीखेंगे. तो आज हम सबसे पहले अपना जावा का कोड लिखेंगे और देखेंगे कि कैसे इंस्टॉल होता है और कैसे चलता है. So to install JDK, what we are doing that. So first of all, today we are also discussing about installation, how Java can be executed onto your machine. You can either use a JDK on your system. मैं तो यही मानूंगा कि आप केवल प्लेन JDK और नोटपैड से मदद लें. JDK plus notepad, you can not to download anything and you can easily execute and learn about Java. और दूसरा तरीका है, आप कोई IDE जा डाउनलोड कर लें, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट किट, सॉरी एनवायरनमेंट. तो चूंकि मेरे सिस्टम पे डाउनलोडेड है, मैं आपको फिर भी डाउनलोड करके दिखाता हूँ. तो हाउ टू डाउनलोड दिस, यू कैन इजीली गो फॉर द योर ब्राउजर and type it out, what, JDK download. And in this download process, you can here click on this link, first link, which is of Oracle, and download the latest one, that is nothing but latest. JDK 20 is now released. So click on JDK, select on your platform, whatever the platform you are using, Linux, macOS, और जैसा कि हमने शुरुआत में डिस्कस किया था कि JDK is platform dependent. Linux के लिए अलग JDK है, macOS के लिए अलग JDK है, विंडोज के लिए अलग JDK. तो आपका जो भी सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर भी आप कौन सा ऑपरेटिव वो यूज कर रहे हैं, ARM64, X64, compressed, like this. तो आप लोग क्या यूज करेंगे, अगर आपको 64 बिट सिस्टम है, यू कैन इजीली डाउनलोड, क्लिक ऑन दिस and you can download your JDK. And there is a simple installation process. Next, and it is installed on your system. And then how to check that system is installed? JDK is installed onto your machine. कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से आप लोग देखिए. तो आफ्टर द इंस्टॉलेशन, मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है. तो यू हैव टू राइट विंडो R and click CMD and one command is prompted. And please type Java C, Java compiler, because we are installing JDK, so you have to check Java C. C stands for compiler. And press enter and check it out. Something is, code is written here. Some commands are there, which is description by Java C. And so you know that the Java is present onto your system like this. Please check it out.
तो सम कमांड इज एलेबोरेटेड कि जावा सी से हम क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर is shown by the command prompt. So that means, or you can say like this: Java C version, Java version. Sorry, Java version. So my version is 18, and you are downloading 20. तो कुछ ज्यादा चेंज है नहीं, बस वही मेन वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना कि मेन को अब क्लास के बाहर लिख सकते हैं, वो वर्जन चेंज है। तो आगे बात करते हैं। तो नाउ जेडीके इज इंस्टॉल्ड and downloaded as well as installed. Now I am going to write my first code. And what you have to do, one more thing, जो लोग जेडीके से नहीं करना चाहते and go for the IDE, तो हम लोग इक्लिप्स का यूज करेंगे। तो जेडीके इक्लिप्स यूज कर सकते हैं, वीएस कोड यूज कर सकते हैं, वट एवर यू वांट। तो जेडीके, सॉरी नॉट इक्लिप्स, डाउनलोड इक्लिप्स, डाउनलोड, go for the Eclipse Foundation and download it। 2023 इंस्टॉलर डाउनलोड करके इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो हम कहाँ गए? eclipse.org.downloads पे गए और उसको हम लोगों ने यहाँ से डाउनलोड once you click on that, the Eclipse is downloaded and it is asking for no need to pay anything, it is a free domain, and once it downloaded please install it and rest हम फिर IDE पे चल के देखेंगे। So now how you are going to execute your first code, आज हम अपना पहला कोड रन करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो Eclipse is downloaded as well as installed in my system। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नोटपैड पे इस कोड को कैसे लिख सकते हैं। तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ जहाँ पे अपने मैं सारे कोड्स को स्टोर करना चाहता हूँ। तो राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर किया, जावा ऑनलाइन ट्यूटोरियल, ऑनलाइन ट्यूटोरियल फोल्डर को बनाया। अब मेरे में जेडीके इंस्टॉल है, तो मैं अपने कोड को लिखने के लिए कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज करूंगा। मैं यहाँ पर नोटपैड को टेक्स्ट को यूज कर रहा हूँ और इसमें मैं अपने कोड को लिखूंगा। तो लिखते हैं। तो my first code is like that: class. So this is your first keyword, class. To make a class, you have to write class. This is the one of the keyword. What is that? तो मैं एक एक करके नोट्स भी आपको दिखाता रहता हूँ। तो फर्स्ट कीवर्ड के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। इज दैट न्यू पेज। यहाँ पे मैं टॉपिक दे देता हूँ कीवर्ड। पहला कीवर्ड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉपी कर लेता हूँ मैं और ताकि आप लोगों को आसानी रहे कि हम लोगों ने कौन कौन से कीवर्ड्स को डिस्कस कर लिया। ये कीवर्ड हमारा पहला आ गया, क्लास। Where is the class keyword is? See here. This is your first keyword introduced. To make a class, we can use class keyword. तो देखते हैं कैसे बनता है क्लास। तो अच्छा, एक चीज और आप लोग ध्यान दीजिए, जितने भी कीवर्ड है दे आर इन स्मॉल केस। ऑल द कीवर्ड्स इज इन स्मॉल केस। नो कीवर्ड इज स्टार्ट, कहीं भी कोई कैप्स नहीं है। नेक्स्ट, क्लास। नाउ द आइडेंटिफायर।
If you want to create a class, you have to give the name. So I am giving my first hello demo, and this is the scope of your class. This is the body. अभी मैं एक एक करके हर एक चीज को डिस्कस करूंगा, आप लोग प्लीज कंसंट्रेट हैं। पहले हम देखते हैं कि क्लास कैसे बनाते हैं। तो क्लास, क्लास का नाम और उसका स्कोप हमने डिफाइन किया, एंड देन व्हाट यू हैव टू राइट, पब्लिक स्टैटिक void main, and in this main I am writing like this, a string arg। पहले मैं पूरा कोड लिख देता हूँ, फिर आपसे बात करते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट println, and inside that I am writing hello world। Now this is the, this whatever I am writing here, I have to save it। अगर जो मैं इसको इसी फाइल में सेव कर दूंगा तो इस फाइल का नाम क्या रह जाएगा? चेक करते हैं, एक बार फोल्डर पे जाते हैं। मैंने ये फाइल क्रिएट किया था। व्हाट टाइप ऑफ द फाइल इज, इट इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो ओपन करेंगे, अभी भी इसके अंदर जावा कोड ही है, लेकिन कंपाइलर को नहीं पता चलेगा जावा कोड है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे फाइल का टाइप सेव एज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? तो अच्छा, क्लास का नाम वैसे तो मस्ट भी बोलना चाहिए, लेकिन क्लास, इस फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। पहले मैं दिखाता हूँ किसी और फाइल का नाम रखकर, फिर मैं आपको आगे की बातें बताऊंगा। तो अभी मैंने अपनी फाइल का नाम सेव एज किया, और इस फाइल का नाम मैंने रखा abc.java। .java is an extension which tells that this is a Java file which contains a Java code, Java source code। जिस तरीके से हम लोग वीडियो बनाते हैं .mp4, वो ये बताता है कि इस फाइल के अंदर वीडियो हो सकता है। .docs, .excel, उसी तरीके से किसी भी जावा का कोड जिसमें लिखा हुआ है, अगर जो मुझे कंपाइलर को रिकॉग्नाइज कराना है, तो मुझे उस फाइल को जावा एक्सटेंशन के साथ ही सेव करना पड़ेगा। एंड आई एम सेविंग इट। नाउ यू कैन चेक इट आउट। What my file name is? My file name is ABC. And what is the type of that file? That is Java। Now it is good। तो मेरा सोर्स कोड इज रेडी। इसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं, और हेलो वर्ल्ड पहले प्रिंट करके दें। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, ये जो यूआरएल ऊपर दिख रहा है आपको, ये सब कुछ हटा देना है आपको, और यहाँ पे लिखना है CMD। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी तक? आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसका पाथ क्या है। सी यूजर्स में, एसर में, डेस्कटॉप में, जावा ऑनलाइन ट्यूटोरियल जो हम लोगों ने फोल्डर बनाया, उसके बाद ये कर्सर ब्लिंक करना। दैट मीन्स व्हाट, हम उस पाथ पर हैं जहां पर ये एबीसी फाइल पड़ी हुई। लेट अस अज्यूम आपने कोई वीडियो स्टोर किया है डी ड्राइव में, और आप उसे ढूंढ रहे हो सी ड्राइव में, तो क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल उसी तरीके से हम जावा को कोड जहां लिखते हैं वहां तक का पाथ होना चाहिए, फिर हम उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। इसलिए हमने वो नहीं, इस पाथ को लिया। टू रन द कमांड, to run the command, what we are using, to run the command, what we are using, we are using Java C, sorry, to compile the code, to compile the source code, what command we are using, Java C, Java C file name dot Java। To compile the code, what we are using Java C file name dot Java। And to run, this is for compilation। And to run the code, what we are writing, Java bytecodename, क्योंकि आफ्टर द कंपाइलेशन बाइट कोड इज जनरेटेड। चेक करते हैं क्या हो रहा है।
तो अभी हम लोग अपने फोल्डर में आ चुके हैं, हमारा कोड रेडी है abc.java, और हमारा पाथ भी वही शो कर रहा है। और हमने यहाँ पे क्या लिखा, जावा सी टू कंपाइल द कोड, जावा सी, and file name. What is our file name? Is our file name is abc.java. If everything is written fine in that source code, it is not prompted any error. So I'm writing, clicking on that. तो जैसे ही ये कंपाइल हुआ, सब कुछ ठीक था मेरे कोड में, और एक बाइट कोड जनरेट हो गया, ये देखो यहीं पर। अब ये कैसी फाइल है? दिस इज अ क्लास फाइल, दिस इज अ बाइट कोड। बाइट कोड फाइल के नाम का नहीं बना, बाइट कोड क्लास के नाम का बना। ये देख रहे हैं आप, व्हाट इज माय क्लास नेम इज, दैट इज हेलो डेमो। बाइट कोड कभी भी फाइल के नाम का नहीं बनता है, हर एक क्लास का एक इंडिविजुअल बाइट कोड बनता है। तो जेडीके का काम ओवर हो चुका है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। JDK is a compiler which is compile the code. Once it is compiled successfully, one byte code is generated. अब इस बाइट कोड को आप कहीं भी कंपाइल रन करा सकते हैं जहां पर JRE है। Once the byte code is generated, the JRE comes into the picture. And that byte code, हम फिर से देखते हैं एक बार, that byte code is here. Now what we are doing? Now I want to run this code. So to execute this code, what we have to write? Java, the bytecode name. What is the bytecode name? Is hello demo. Hello demo, and enter it. So what it is printing? Whatever we are writing code, कैसे कैसे वो है उसको हम elaborate करेंगे। अभी क्या हुआ कि वो जावा का कोड एग्जीक्यूट हो गया। तो जो भी मैं कोड पढ़ाता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा, और जो भी लिंक्स उस ट्यूटोरियल से रिलेटेड है, आप यहां तक करें, फिर हम आगे और डिस्कस करते जाएं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड कीप टच विद दैट। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।